Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So this is the second video for the iOS upgradation series, and in this video we can learn about 9800 wireless controller upgradation. So the previous video was designed for the router iOS upgradation. So if you want you can check out that link. But right now in this video we can cover only the wireless controller design and the upgradation. So Cisco ने एक नया बॉक्स इंट्रोड्यूस करा है that is the 9800. Uh, Currently we have like old models as well, 5500 and the 3500 series wireless controller. But those models are announced as the end of life. So Cisco ने एक new box launch करा है so that we can replace those boxes with the 9800. But this model having a higher feature as compared to the older one, and this is the bit costlier as compared to the previous model which I told you, like 3500 and the 5500. So the basic difference of those two models, and the difference is 9K having a higher throughput, and it's provide a higher speed as compared to legacy wireless controller. So if you want, you can learn more differences. So you have to check the differences on the internet. But right now we can cover only the upgradation part. So हम upgradation दो तरीके से कर सकते हैं, via the graphical user interface और the command line interface. The command line interface आपको is very bit similar like Cisco Catalyst switch. जैसे आप switches पे कर सकते हो, वैसे ही similar commands हैं जो हम रन करते हैं वायरलेस कंट्रोलर पे. Catalyst switch is just like 9300, 3650 and 3850. So in these three models we can install the iOS into the packages form. So there's the similar behavior in 9800 WLC as well. So कोई भी iOS अपग्रेडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर iOS जो हम डाउनलोड करते हैं सिस्को की साइट से, एंड वो iOS को आपने जब डाउनलोड करा होगा तो वो प्रॉपरली डाउनलोड हुआ है या उसके पैकेट्स एंड फ्रेम्स इन बिटवीन डिस्कार्ड हो गए हैं. तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, आप उसकी पर्टिकुलर iOS की MD5 वैल्यू चेक कर सकते हो. अब MD5 वैल्यू कैसे चेक करी जा सकती है? आप जब आपने iOS डाउनलोड कर लिया है उसको आप WLC की फ्लैश ड्राइव में कॉपी कर लीजिए, एंड देन यू कैन वेरीफाई लाइक verify/MD5 boot flash and the iOS name. तो वो आपको एक कोड देगा, एंड वो कोड आप सिस्को की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे इस अगर आप देख पा रहे होगे तो एक स्नैपशॉट है जहाँ पे मैंने एक 1792 वर्जन का एक कोड डिफाइन करा गया है MD5 चेकसम. सो ऐसे ही सिमिलर कोड आपको राउटर की या वायरलेस कंट्रोलर की फ्लैश ड्राइव में दिखेगा. तो अगर ये कोड सेम है तो दैट मीन्स योर iOS इज fully downloaded and it is not corrupted in between them. तो हम दोनों ही मेथड समझेंगे कि कैसे iOS अपग्रेडेशन किया जा सकता है. सो पहला मेथड हम देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू. सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए सबसे पहले आपको GUI का एक्सेस चाहिए. तो आपको जैसे ही कोई न्यू डिवाइस लॉन्च हो रही है साइट पे, तो आपको उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप उसका GUI का एक्सेस ले लेंगे. तो जैसे ही आपको GUI का एक्सेस मिल जाता है तो आप उसको थ्रू GUI, आई मीन यू डोंट नीड टू डिफाइन एनी कोड ओवर देयर. So you have that interface. Through that interface, you can upgrade the iOS very easily as compared to the command line interface. So अपग्रेडेशन करने के लिए आप देख जैसे ये स्नैपशॉट है यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, एंड गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. In this software management we have a different features as well. Like the first one is the upgrade mode. Upgrade mode you can do it like via the bundle mode or the install mode. But Cisco recommended us the best practice is to upgrade any of the devices on
the Cisco Catalyst or the wireless controller. So the better approach is to install the iOS into the install mode. Like that particular iOS is extracted into the packages, and that packages will be installed into your flash drive. Okay. So हमने यहाँ पे upgrade mode को select कर लिया as a install mode. And the second point is the transport type. So in transport type, we having a different features. Like the first one is the My Desktop. My Desktop is you can browse that particular iOS from the locally from his machine. And the second is through the TFTP. आप TFTP server बनाओ and TFTP and WLC की reachability करवाओ, then you can transfer the file from the TFTP application to the wireless controller. The third one is the SCCP. I mean एक SCCP server होगा जिसके थ्रू आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो from WLC to SCCM or the SCCP to WLC. Okay, so my better approach is once you have the GUI access, so you can open that link into the local system. Once you open that link, so you can choose the transport type as a My Desktop, and you easily browse and select that particular file into the controller. सो अगर आप देख पा रहे होगे कि नीचे एक ऑप्शन है सोर्स फाइल पाथ. सो आप यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट करोगे, तो आपको एक वो पर्टिकुलर जहाँ पे आपने डाउनलोड करी है वो वायरलेस कंट्रोलर की इमेज डॉट बिन, सो आप सिलेक्ट करो. एंड the next method is it's showing you the progress of file is transferring from his machine to the wireless controller. अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे होगे तो it showing as a 70%, so that means 70% of the files are copied and the rest are copying in progress. ओके, सो जैसे ही ये प्रोग्रेस फुल हो जाएगा, आई मीन इट कुड बी 100%, देन देयर इज अ टू boxes would be appear. The first one is the download and install, and the second is save configuration and reload. So download and install, that means your files have been transferred into the wireless controller flash drive. So now you are ready to download those packages into the APs, and those packages should be installed into the wireless controller as well. So once you download and install, so it will show you the progress. Those that files should be extracted into the AP services packages, and that files is stored into the flash drive. So I mean ये आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता रहेगा बैकएंड में. जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको ये एट लास्ट इज शोइंग यू द save configuration and reload. So once you reload it, so that box, it also takes 15 to 20 minutes to, I mean, to take the new image. And once that new image it will be shown up, so it automatically comes up and you check the version of the controller. Okay, सो WLC में क्या होता है, WLC में एक RP पोर्ट भी होता है. आई मीन इन केस इफ one of the WLC are acting as a primary and the other WLC are acting as a secondary. So आप दोनों WLC को एक साथ ही अपग्रेड कर सकते हो if any of the like GUI or via CLI as well. Okay. सो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको हिस्ट्री दिखाता रहेगा कि जो जो प्रोग्रेस दिखाता रहेगा कि जैसे ही आपका WLC कौन से स्टेप पे पहुंचे हैं, तो आप मीन वाइल प्रोग्रेस देख सकते हो. ओके, एंड इसमें एक एडिशनल नोट है कि अगर कोई भी आप WLC को अपग्रेड कर रहे हो, रनिंग उसका वर्जन अगर 17.4 है एंड उसको आप हायर वर्जन पे अपग्रेड कर रहे हो, लेट्स से 17.9, सो अगर आपने उसको कमिट या और एक्टिवेट नहीं करा है, तो वो ऑटोमेटिकली फॉल बैक कर जाएगा 17.4 पे आफ्टर 6 आवर्स. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप 17.4 से कोई भी हायर वर्जन अपग्रेड करोगे. तो जैसे ही आपका WLC अपग्रेड हो जाएगा, तो आपको उसके बाद उस पर कमिट जरूर चलाना है, अदरवाइज द कॉन्फ़िगरेशन वुड नॉट बी सेव्ड
and it's automatically fallen back to the previous version. ओके, तो ये बात थी आपको GUI से करने के लिए। ठीक है, आप इसी सेम प्रोसेस को अपग्रेडेशन कर सकते हो वाया CLI। ठीक है, CLI के लिए जैसे मैंने बोला था कि आपको पहले MD5 चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका MD5 वैल्यू की वैल्यू सेम आ जाती है दोनों एंड पे, सो इट वुड बी अ बेटर अप्रोच टू डू एनी ऑफ द iOS अपग्रेड। CLI प्रोसेस के लिए आप इसको स्टैंड अलोन भी कर सकते हो, और इसको आप अगर आपका WLC HA मोड में है तो आप वो भी सेम ही कमांड से कर सकते हो। WLC में एक USB पोर्ट होता है, या तो आप USB पे iOS कॉपी कर लीजिए एंड देन उस USB को कनेक्ट कर लीजिए WLC पे, एंड कॉपी द रिक्वायर्ड फाइल्स इनटू द WLC फ्लैश एंड देन रन दोज कमांड्स। अदरवाइज if you don't have the USB drive, so you have to take the other methods to copy the required files into the flash drive. So the other method is you can use TFTP, or you can use any of the file transfer application. I mean, our goal is to copy the required files into the flash drive. Once it is there, so you can move ahead for the next step. So the next step is the major command is like that is install add file boot flash, and you have to define the .bin file which you downloaded, and I mean which you want to activate that particular file into the WLC. Once you define that, and when you press enter, it will show you the progress that the file are going to be extracted into the like HA mode, and they will transfer those files into the like the secondary WLC as well, if the your WLC is running as in HA mode. In case if your WLC is running in a single standalone, so it will show you the basic summary that this files is copied into the RAM, into the flash, and those parameters would be extracted. And once they done the extraction, they will ask to I mean what should be done ahead. So you have to define that particular iOS should be activated, and then it automatically reload that particular file. And once the WLC reload is done, so you have to commit that particular configuration into the WLC, so that the new version is always chosen once the WLC is going to be reboot. I mean, in case if any power failure should be there, so they automatically takes the new version as compared to the previous version. So I hope I covered the WLC upgradation process through this video. In case if you have any doubt, so you can comment me so that I can give more clarity on this. And thank you for watching this video. And if you like this video, so please like and subscribe my channel so that you get more notification, and I'll show you the more real network problems through my channel. Thank you for watching this video. Have a nice day.